Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra here. Today I have taken class 12 miscellaneous exercise on chapter 7 integrals. And in this video we are going to solve question number 10 and 11. So let us see what is question number 10. So question number 10 is integral of sine to the power 8x minus cos to the power 8x divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x dx। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बहुत ही आसानी से इन दोनों इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। First of all, we have to convert this integral into standard form. For this, we have to simplify this. Look here. Here it is given minus 2 sin square x into cos square x. And here it is given 1. And we know that sin square x plus cos square x is 1. So first we have to write this. Sin square x plus cos square x is equal to 1. Now we have to square on both sides to get plus 2 sin square x into cos square x, because here it is given minus 2 sin square x into cos square x. So square on both sides. Square of 1 will be 1. Now put this value here. In place of 1, put sin square x plus cos square x whole square. We get, write this one as it is, sin to the power 8x minus cos to the power 8x divided by, in place of 1 write this one, sin square x plus cos square x whole square, write this one, minus 2 sin square x into cos square x dx। यहां पे दिया हुआ है sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x, इसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सो वी कैन राइट sin टू द पावर 4x स्क्वायर माइनस cos टू द पावर 4x स्क्वायर, a square minus b square. Now here it is a plus b whole square, and a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. So we can write this one, sin to the power, it is already square, so square of sin square x will be sin to the power 4x. So write here sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus 2 AB. A is here sin square x, B is here cos square x. So cos square x. And write this one, minus 2 sin square x into cos square x. And write this dx. Here it is plus 2 sin square x into cos square x. And here it is minus 2 sin square x into cos square x. So it will be cancelled. Here a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So we can write sin to the power 4x plus cos to the power 4x a plus b into a minus b. A is here sin to the power 4x minus cos to the power 4x. And it is divided by this one, sin to the power 4x plus cos to the power 4x. Here it is sin to the power 4x plus cos to the power 4x, and here also. So it will be cancelled. Now we can write integral sin to the power 4x minus
cos to the power 4x dx। अभी हम इसको फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सो वी कैन राइट इंटीग्रल साइन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर dx, a square minus b square। So we can write sin square x a plus b, that means cos square x, b is here cos square x into a minus b। So write a is here sin square x minus b is cos square x dx। So we can write integral sin square x plus cos square x is 1. So write here 1. Here it is given sin square x minus cos square x, and we know that cos square x minus sin square x is cos 2x. Okay, so we can write here minus cos 2x dx, and write here formula. Formula is cos square x minus sin square x is equal to cos 2x. So we can write this one is minus, so write it from here, take it out, and we can write cos 2x dx. Now put 2x is equal to t. Put 2x is equal to t. Then what will be dx? Dx will be dt by 2. So we can write minus 1 by 2 is a constant. So write it outside from integral, and integral cos, in place of 2x write t only. So write cos t dt. Now this one is in standard form, and we know the formula for this. What is formula for integral of cos t? Yes, it is sin t. So write here, we can write minus 1 by 2 sin t, and write a constant c. Now put the value of t. T is equal to 2x. So we can write minus 1 by 2 sin 2x plus c. So finally we get our answer minus 1 by 2 sin 2x plus c. This is your answer. So let us see our next question, question number 11. So question number 11 is integral of 1 divided by cos x plus a into cos x plus b dx। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में cos x plus a into cos x plus b दिया हुआ है। अगर ये न्यूमरेटर में दिया रहता तो इसे हम cos a into cos b के फार्मूले से सेपरेट करके आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे, बट यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे cos a into cos b के फार्मूले से इसको सेपरेट करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में दो सेपरेट टर्म्स मिलेंगे, देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट। तो अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पे cos दिया हुआ है, एंड cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, और साइन का कोई फंक्शन इंटीग्रल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम साइन के एक कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस तरह का जब भी इंटीग्रल आए तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हो उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और उस डेरिवेटिव के एक कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे cos दिया है, cos का डेरिवेटिव हुआ साइन, तो साइन का कांस्टेंट फंक्शन लेंगे साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे साइन a माइनस बी, एंड वी हैव टू डिवाइड आल्सो साइन a माइनस बी। सो राइट हियर साइन a माइनस बी, एंड राइट दिस वन एज इट इज cos x plus a into cos x plus b dx. Sin a minus b is a constant, so we can write, first write this one
sine a minus b outside. Here it is given sine a minus b. यहाँ पे क्या है? cos x plus a. यहाँ पे कोई x नहीं है, so we can write sine a plus x minus x, then write minus b. So here plus x minus x will be 0. So write this one. After that write this. This one is cos x plus a into cos x plus b dx. Now write this one as it is, sine a minus b integral. Here we can write sine a plus x or x plus a. So write here sine a plus x minus x plus b, and it is divided by this one, cos x plus a into cos x plus b, and write this. This one is sine a minus b, and what is formula for sine a minus b? Sine a minus b is equal to sine a into cos b minus cos a into sine b. So here we have to use this. So first of all we have to write that formula. So write here sine a minus b is equal to sine a into cos b minus cos a into sine b. Now we have to use this, and we can write first this one sine a minus b as it is, इंटीग्रल, इसको साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे. देन वी कैन राइट साइन a is here a plus x. So write here sin a plus x into cos x plus b minus sin x plus b into cos x plus a, and it is divided by this one, cos x plus a into cos x plus b dx. Then we have to write this one 1 by sin a minus b. अभी हम दोनों टर्म्स को cos x plus a into cos x plus b से डिवाइड करेंगे. So we can write sin x plus a into cos x plus b divided by this one, cos x plus a into cos x plus b minus this one sin x plus b into cos x plus a divided by this one, cos x plus a into cos x plus b, and write this dx. So we can write this one constant term sin a minus b integral. So cos x plus b और cos x plus b कैंसल हो जाएगा, and here it is cos x plus a, यहां भी दिया हुआ है cos x plus a, so it will be cancelled. So we can write sin x plus a divided by cos x plus a minus sin x plus b divided by cos x plus b dx. Then we can write this one as it is, sin a minus b integral.
Sin x divided by cos x is tan x. So right here it will be tan x plus a minus it will be tan x plus b dx. And what is formula for integral of tan x? Yes, it is log mod sec x. Okay, so we can write first write this one 1 by sin a minus b, then write log mod sec x plus a minus for this log mod sec x plus b. So we can write 1 by sin a minus b into, and we know that sec x is equal to 1 by cos x. So in place of this sec x, we can write 1 by cos x plus a. So right here, so it will be log mod 1 by cos x plus a minus log mod 1 by cos x plus b, and write a constant c. So we can write this constant term 1 by sin a minus b into log, here it is given log 1 by cos x plus a minus log 1 by cos x plus b, and we know that log a minus log b is equal to log a by b. So we can write log mod a is here 1 by cos x plus a, and b is here 1 by cos x plus b, and write this constant c as it is. Then we can write 1 by sin a minus b into log, a fraction is divided by another fraction, so it will go, we can write 1 by cos x plus a multiplied by cos x plus b divided by 1 plus c. So we can write 1 by sin a minus b log mod 1 multiplied by cos x plus b, so it will be cos x plus b. It is divided by this one cos x plus a, plus write this constant c. So finally we get our answer 1 by sin a minus b into log cos x plus b divided by cos x plus a. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू क्वेश्चन. टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.